session. Today we have our guest speaker, Dr. Shreya Jethva ma'am. Ma'am is an assistant professor in Department of Surgery from Rajkot Homeopathy Medical College. Ma'am has been studied in Jawaharlal Nehru Homeopathy Medical College, Parel University, and ma'am has also did many publications. One of the publication is Role of Homeopathy in Alcoholism, Premenstrual Syndrome and Homeopathy, and Homeopathy Management of Delayed Milestone in Children. Ma'am has been also a guide for STSH proposal and ICMR investigator initiated research proposal in the year 2022-2023. And ma'am has also been did many activities by attending many seminars, conferences, etc. We welcome you, ma'am. Session is hand over to you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for this such a honor. Now, what is the meaning of the alcoholism? Okay, so alcoholism is a pattern of alcohol consumption in a this way that it can cause some trouble. Okay, in your health issue, or it can considered that person have alcoholics or alcoholism, that person can't have a control on the amount of intake. Okay, so not everyone person can be considered in the alcoholism. If the person can't control, okay, the amount for intake, so it can consider the person have the alcohol use disorder or the alcoholism. And even though the person know that this amount can cause the serious health problem, in spite of that, person are consuming the alcohol frequently. So alcoholism is a pattern of the alcohol consumption in which there is a trouble in controlling the alcohol consumption or intake, or drinking more that it can cause the serious health problem. Next. What is the normal limit? कि चलो अभी हमने देख लिया कि कोई पर्सन है, ओके, वो ज्यादा अल्कोहल ले रहा है, और या तो फिर उसको पता है कि अगर मैं इससे ज्यादा लूंगा फिर भी मुझे हेल्थ इश्यू आ रहा है, फिर भी वो अल्कोहल ले ही रहा है. सो व्हाट इज द नॉर्मल रेंज कि उसकी वजह से हमें हेल्थ इश्यू ना हो. ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड. Okay, so according to the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, that recommended alcohol limit is in men that is not more than 2 drinks per day, or so no more than 14 drinks per the week. If we talk about the woman, so normal limit is the not more than 1 drink in a day or not more than 7 drinks per week. And the person who have age more than 65 years have the normal limit is the not more than 1 drink per day, and in week there is a not more than 7 drinks. Okay, so this is the normal limit कि अगर कोई person है, okay, if we talk about the male aspect, okay, तो अगर कोई male है वो daily basis पर सिर्फ 2 ही drink ले रहा है, तो उसको हेल्थ हैजर्ड्स इतने नहीं होंगे. लेकिन अगर वो एक्सेस अमाउंट में ले रहा है तो उसको आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसको कुछ ना कुछ हेल्थ हैजर्ड्स होंगे, और दे आर द हैबिचुएट फॉर टेकिंग द अल्कोहल. सो नेक्स्ट. Okay, so in previous slide we see that the parameters is are measuring by the drinks. So 1 drink, 2 drink per day, 14 drink per weeks. So what is the amount in a 1 drink? So the standard drinks are, if the person consume the beer, so there is a normal in 1 drink, normal limit is 330 ml. Okay, so if the female consuming the beer, so per day the female को 330 ml of beer are safe, and in the male, so it is the true drink are advisable, not more than that. If we talk about the wine, in 1 drink there is the 100 ml amount, and the spirit and other drink that is the 30 ml, that is the normal limit. Above the normal limit, the person can be considered in the alcoholism or the alcohol use disorder. Next.
what is the statistical data? So in India, alcoholism or the alcohol consumption is widespread across the all state and union territories. Even the alcohol consumed by the people who are living in a banned state like Gujarat, Bihar, or other state in which there is a not permit given to the everyone or in every city, but they are also consuming the alcohol. Okay, and around 160 million people are consume the alcohol, and in national survey on the drug use and health, more than 29 people have the alcohol use disorder, according to report of the 2022. तो अगर पूरे देश के जो भी पॉपुलेशन है उसमें 160 मिलियन पीपल आर टेकिंग द अल्कोहल, बट फ्रॉम दैट पीपल 29 मिलियन हैव सफर्ड फ्रॉम द अल्कोहल यूज डिसऑर्डर और द अल्कोहलिज्म. It means they can't control their intake or the amount they consume. And if we talk about in which state there more are alcoholics, we can find that is the number one state is Arunachal Pradesh, in which 53% are male consumer and the 24% are the female consumer. And in all world aspect, our India rank is the 103rd rank. Next. It is quite far from the top 10 country, but still it is burden for us. So the alcoholism involves the drinking more alcohol to get the same effect, or if person withdraw or quick stopping the taking alcohol, he can experience the withdrawal symptoms. मतलब कि हम जानते हैं कि अगर कोई पर्सन डेली 30 ml ले रहा है फॉर द यूफोरिक स्टेट, we all know that all the alcohol consumer are in consume the alcohol because they like the euphoric state when when he gets the drink. The euphoric state, it means they have the happiness feeling, the depression is decreased, stress is decreased, so that's why people are taking the alcohol. But if the person taking the alcohol on the regular basis, okay, so after some time, person have the resistance for that amount. So person are getting the for the getting the euphoric state. तो वो जो पर्सन है वो ज्यादा अल्कोहल लेगा फॉर गेटिंग दैट यूफोरिक स्टेट दैट ही वांट्स. एंड अगर वो कोई रीजन की वजह से या तो कोई फैमिली प्रेशर की वजह से या कोई भी रीजन की वजह से वो अल्कोहल स्टॉप कर रहा है अभी कि चलो अभी मुझे नहीं लेना है, तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, लाइक नोशिया आ रहा है, वोमिटिंग आ रही है, ट्रेमर्स आ रहे हैं, ओके, स्वेटिंग हो रहा है लॉट ऑफ. तो वो उसको कंपनसेट करने के लिए फिर से वो अल्कोहल पर चढ़ जाएगा कि चलो अब तो मुझे अल्कोहल लेना ही पड़ेगा. So, unhealthy alcohol use includes any alcohol use that puts the health at risk or causes the other alcohol related problem. Some people are saying that the red wine is good for the health, good for the skin, good for your heart. But even though the red wine has some benefits, okay, पर अगर आप उसका नॉर्मल लिमिट से ज्यादा ले रहे हो तो वो कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू करेगा ही. And person who are alcoholics who have habituated to taking the alcohol, sometimes they may go into the binge drinking. It means in one sitting they consume the large amount of the alcohol, and binge drinking can cause the significant health and safety risk. That we can know that in India every day the hit and run cases are easily founded. Okay, so and even if the person if this pattern of drinking result in repeated significant distress and problem functioning in daily life, so person may likely have a alcohol use disorder. तो अगर कोई पर्सन है वो ज्यादा अल्कोहल ले रहा है ऑन डेली बेसिस या तो फिर एक सिटिंग में वो बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर लेता है और उसकी डेली लाइफ पर वो आ रहा है कि वो अपनी तरह से ड्राइव नहीं कर रहा है, अपना वर्क नहीं कर रहा है, अपनी फैमिली के साथ वो बैठ नहीं सकता है, उसके साथ अब्यूजिव बिहेवियर कर रहा है, तो पर्सन में हैव द अल्कोहल यूज डिसऑर्डर और द अल्कोहलिज्म.
and this alcoholism may range from the mild to the severe variety according to how the person react to this situation. Next. Hello. Next slide. Okay. So, what are the signs and symptoms of the alcoholism or the alcohol use disorder? So, signs and symptoms are the desire to drink alcohol, like frequent craving for the alcohol, frequent want the alcohol, and inability to limit the amount of alcoholic drink. क्रेविंग तो हो रही है, चलो डिजायर भी हो रही है, लेकिन एक अमाउंट के चलो बस अब इससे ज्यादा नहीं, तो उसका वो कंट्रोल है वो नहीं हो रहा है इस पर. देन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन ड्रिंकिंग. ओके, बहुत ज्यादा टाइम वो ड्रिंकिंग में ही ले रहा है. this can be happen in this can be seen like in a lower middle class or the lower socio-economical person, that after they are coming from their work, तो वो रात पूरी रात मतलब वो देर रात तक वो बस ड्रिंकिंग में ही लगे रहते हैं, और फिर वो इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, फिर वर्क पर जाते हैं, अगेन द साइकिल इज रिपीटेड, कंज्यूम द अल्कोहल, विड्रॉल सिम्टम्स, then again consume the alcohol. So spending a lot of time in drinking or withdrawal later return to the alcohol due to some family health problem or the personal problem. अगर वो कोई रीजन की वजह से विड्रॉ भी कर रहा है कि चलो अब मुझे नहीं पीना है, तो अगर उसके फैमिली में कुछ इश्यू आया, हेल्थ इश्यू आया है, स्ट्रेस आया है, कोई उसके पर्सनल इश्यू आ रहे हैं, तो वो फिर से अल्कोहल लेने लगेगा. Then he can drink in a bad situation. Now, if the person consume the alcohol on a long period of time, so that can develop a tolerance to alcoholic amount. And now he needs more alcohol to feel the same effect previously. If withdrawal symptoms such as nausea, sweating, tremor occur, okay, when he is not drinking, so again he binge to the alcohol, and alcohol use includes the period of intoxication and the withdrawal symptoms. तो ये विशियस साइकिल जो है वो पर्सन में चलती ही रहती है कि पहले अल्कोहल कंज्यूम किया, उसकी वजह से उसको यूफोरिक स्टेट आया या तो फिर इंटॉक्सिकेटेड स्टेट आया, फिर उसके बाद वो अल्कोहल की जो भी इफेक्ट्स होती है वो कम हो रही है, उसके बाद उसको विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, तो अगेन वो जो भी विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं उसको कंपनसेट करने के लिए वो फिर से अल्कोहल कंज्यूम करेगा. So in alcoholism we can find the sign and symptoms like there is a craving to drink alcohol, person have inability to limit the amount of alcoholic drink, he spends lot of time in drinking, frequently bulge or binge to the alcoholic drink, okay, and there is a withdrawal symptoms. Next. Ma'am, screen is not visible. Okay. One second, please. Now visible. Okay, so sharing is stopped. Sharing again. Now, Now, sir, it's visible, sir. now visible. Yes, sir, visible. Okay, please continue, ma'am. Hello. Continue, ma'am. Okay, sir. So we know that what are the signs and symptoms of the alcoholics or who have the habit to taking the alcohol on a daily basis. Okay. So ये पर्सन जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पर अल्कोहल ले रहे हैं तो उस पर क्या क्या अब हेल्थ हैजर्ड्स आ सकते हैं. सो द फर्स्ट वन इज द लीवर प्रॉब्लम.
because whatever the food or fluid you are taking, that metabolize in your liver. Okay, so consuming the alcohol on a regular basis may increase the fat in liver, that called as a fatty liver or the hepatic steatosis. Okay, if the person not stop doing this, so that can lead to the liver diseases like alcoholic hepatitis. And again, person are not stop drinking, so on a long period of time the person may get the irreversible damage, and that called as the cirrhosis or the hepatic failure. So in liver problems, there may be hepatic, there is the hepatitis or the hepatic steatosis or the cirrhosis and the hepatic failure. There is also some digestive problem the person may get, like gastritis, the ulcer that is occurred in the stomach and duodenal, and drinking too much alcohol can cause the pancreatitis also. There is also person suffered from the heart problem like the high blood pressure and frequent high blood pressure that may put the person in the risk of the heart enlargement or the heart failure or the heart stroke. So there are the major health hazards by taking the too much alcohol. Next, other health hazards like the decrease your sexual function, okay, erectile dysfunction in a man and in a women. It may lead to the amenorrhea or it can prevent the menstruation. There may be person may get the nystagmus, weakness and paralysis of the eye muscles, and alcohol may damage the bone by osteoporosis or the pathological fracture. Next. Some neurological complication may occur, like excessive the alcohol consumption can cause numbness, frequent pain in your hand and feet, confusion, dementia, short-term memory loss, etc. Even alcohol may weak your immune system and create some kidney diseases and may put the person in a risk of the cancer, diabetes, etc. And alcohol may interact with some drugs, especially the NSAIDs and some antibiotics and all. And it may either increase, decrease, or make the person in a dangerous state. So these are the health hazards that happen in your person that who are alcoholics. Next. Now, how we diagnose that the person having the alcohol use disorder or the person are the alcoholic? So it is done by asking some several questions about the drinking habit, like how many days you are consuming, and in each day how much amount of alcohol you are taking, and in which form you are taking. Okay, after taking the alcohol, what is your mental state? Okay, is your alcohol consumption may impact your daily lifestyle or not? May create some family health issue or a stressful condition or not, etc. So my questionnaires also performs the physical examination by to find out the tremor or any hepatomegaly or anything else, and completing a mental health assessment कि पर्सन की मेमोरी कितनी है, उसका ओरिएंटेशन कितना है. So through this, we can diagnose that the person having the alcoholism or alcohol use disorder or not. Next. Now the treatment. Okay, that we know that the person having don't have the control over the consumption of the alcohol and they are repeatedly taking the alcohol, okay, and get some health issue.
So what we can do in this person, okay? So in treatment option, we have to give psychological counseling. We have to give a motivation to the person and divert to person by some skills के अगर हम person को पहले questions ले लेते कि आप क्यों अल्कोहल ले रहे हो, कितना अमाउंट में ले रहे हो, उसके विड्रॉल सिम्टम्स आप पर क्या आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें एक प्लान करना होता है कि चलो अब आप धीरे 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 चलो आप अपना अल्कोहल कंजप्शन है वो कम करो। फिर वो कंजप्शन कम करेगा तो उसमें एक विड्रॉल सिम्टम्स आने लगेंगे, तो वो फिर से वो अल्कोहल ना लेने पड़े उसी के लिए हम एक उसको एक एक्टिविटीज देते हैं कि चलो अब जब भी आपको ये लग रहा है कि भाई चलो अब मैं अल्कोहल नहीं मतलब मैं ले ही रहा हूँ उस पर मेरा कंट्रोल नहीं रहा, तो आप उस टाइम पर ये एक्टिविटीज करो। Then, if the person having feels some sweating, tremor, some pain, तो उसका मैनेजमेंट प्लान एक प्रॉपर करना पड़ता है कि हम क्या कर सकते हैं। तो उसको मोटिवेशन दो, उसका साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करो कि अगर कोई पर्सन डिप्रेस है, स्ट्रेस में है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो उसका हम काउंसलिंग कर सकते हैं। एंड वी कैन यूज सम ओरल मेडिकेशन लाइक डाइसल्फिरैम। So what is the disulfiram? So it works by inhibiting the enzyme. That enzyme is the aldehyde dehydrogenase. Okay. So what is the aldehyde dehydrogenase? So in liver, the main metabolism occur. Okay. So alcohol is convert into the some chain that is a dehydrogenase. Okay. And dehydrogenase causes the conversion of the alcohol into acetate formation, and this acetate formation creates the euphoric state in person, like makes them happy, decrease the stress and all. So this जो ये मेडिसिन है डाइसल्फिरैम, वो क्या कर रही है, तो जो वो यूफोरिक स्टेट आ रहा है पर्सन में वो ये स्टॉप कर रही है कि जिसकी वजह से पर्सन है जो यूफोरिक स्टेट के लिए वो कंज्यूम कर रहा है वो ये बंद कर दे। Then another medicine is the naltrexone. So naltrexone are used to manage the alcohol by reducing the craving and the feeling of euphoria. So these are the two leading medicines that are useful for decrease the alcoholic intake. Next. Naltrexone also we can get from the market in the injectile form, and the medicine the brand name is the Vivitrol. Okay, and इसका एक monthly injection होता है जो regular basis पर person को दिया जाता है जो भी alcoholic addict है, तो उसकी वजह से उसको जो euphoric state आता है वो ना आए और उसकी craving है वो decrease आए। इसके अलावा हम उसको सपोर्ट दे सकते हैं एंड दी उसकी जो भी मेंटल है उसकी प्रॉब्लम है व्हाटएवर उसका हम काउंसलिंग कर सकते हैं। सो दिस इज द मैनेजमेंट ऑन द मॉडर्न एस्पेक्ट के चलो ये हो रहा है कि थ्रू द मेडिकेशन, थ्रू द काउंसलिंग, थ्रू द पेन मैनेजमेंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट। वी टॉक अबाउट द होम्योपैथिक मैनेजमेंट, हम होम्योपैथी में क्या कर सकते हैं। In homeopathy, there are many medicines that can help to treat the alcohol addiction and their negative effects on the body. तो हमारे पास बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है कि जो क्रेविंग है अल्कोहल की वो कम कर सकती है, और अल्कोहल कंजप्शन की वजह से जो कोई भी हेल्थ इश्यू आ रहा है, उसकी लीवर कंप्लेन, उसकी डाइजेस्टिव कंप्लेन, न्यूरोलॉजिकल कंप्लेन, उसको भी ये कंपनसेट करने में हेल्प कर सकते हैं। And homeopathic medicine can bring a smile to the patients and families with a sweet pill that has no such side effects. Next. Sorry to interrupt, ma'am. Participants are saying that the screen is not visible actually. Okay.
Hello. Okay. Is Now, it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is visible, ma'am. Okay. So I put the different medicines on a different condition. Okay, so we have some homeopathic medicine that reduces the excessive craving for alcohol. कि जो पर्सन को बार बार क्रेविंग हो रही है, डिजायर हो रही है कि मैं अल्कोहल ले लूं, तो वो डिक्रीज कैसे कर सकते हैं? तो उसकी सर्टेन मेडिसिन है, एंड द मोस्ट कॉमन इज द सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, सल्फ्यूरिक एसिड मदर टिंचर फॉर्म में आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो कि जो उसकी क्रेविंग जो हो रही है एक्सेसिव, वो कम कर सकते हैं. इवन इन फैमिली ट्रेंड्स के लाइक चलो उसकी पूरी फैमिली में ऐसा ट्रेट ही है कि चलो दादा, फिर बेटा, फिर उसके बेटे, सबको पहले से ऐसी हिस्ट्री है कि दे आर दी अल्कोहलिक्स. ओके, तो इवन वी गेट द पास हिस्ट्री के चलो इन सब में फैमिली टेंडेंसी है, तो दैट कैन बी रिड्यूस बाय दिस मेडिसिन. Another medicine is the Angelica. Angelica is mainly used for the menstrual complaint and the GIT complaint, but this medicine we can also use to decrease the craving for alcohol. Then China officinalis, Kali beach, phosphorus, porcus, sepia, sterculia, strophanthus, then strychnium, sulfur, syphilinum. So these are the medicines that can reduce the craving for the alcohol. Next. नाउ वी कैन नो दैट के चलो अगर ये पर्सन है वो ज्यादा अल्कोहल ले रहे हैं, जो भी अल्कोहलिक्स है, तो उसकी वजह से उसको डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है, उसमें सिम्टम्स आ रहे हैं, उसमें पैथोलॉजी क्रिएट हो रहे हैं, और उसमें से एक पैथोलॉजी हो रही है हमारे लीवर में, जो हिपेटिक कंप्लेन है. तो जो भी हिपेटिक इश्यू हो रहे हैं, लाइक उसका फैटी लीवर है, जॉन्डिस हो रहा है, हिपेटाइटिस है, उसको सिरोसिस है, तो उसमें हम कौन कौन सी मेडिसिन यूज कर सकते हैं? तो उसमें कार्डस मेरियंस भी हम यूज कर सकते हैं कि वो जो भी अगर राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में आपको पेन हो रहा है, आपकी स्क्लेरा येलो हो रही है, हिपेटो स्टार्टिंग में मेगाली हो रहा है, बाद में सिरोसिस हो रहा है, तो वी कैन यूज द कार्डस मेरियनस. एंड ऑल्सो वी कैन यूज द जेलिडोनियम. के पर्सन को राइट हाइपोकॉन्ड्रियल में तो पेन हो रहा है, साथ में उसको पीछे स्केप्युलर वो सब रीजन में भी पेन हो रहा है. ओके, एंड उसको साथ में लीवर कंप्लेन के साथ उसको कॉन्स्टिपेशन भी है सीवियर, तो वी कैन यूज द जेलिडोनियम. वी कैन ऑल्सो यूज द कीमाफिला, जियोनेथस, प्रोटेलस हॉरिडस, लैकेसिस, then natrum sulf, phosphorus, picric acid. So this medicine we can use when person having the hepatic complaint, and this medicine can reduce the complaint. Next. Repeated consuming the alcohol may causes the renal damage. Okay, it may cause some stricture or may cause some adhesion. Even sometimes some stone are also occur due to alcohol. Okay, so in this condition we can use ammonium carb, apis mel, arsenic alb, boron mat, hemophilia, cuprum ars, then cuprum mat, opium, phosphorus, terebinth. So this medicine can use in a renal complaint. Next. वी कैन सी दैट के अगर कोई पर्सन अल्कोहल ले रहा है, तो अगर वो एक साथ बहुत ज्यादा अल्कोहल ले रहा है ऑन अ लार्ज अमाउंट, ऑन अ बिंज ड्रिंकिंग, सो एक्सेसिव लार्ज अमाउंट कैन कॉज द नोशिया एंड सडन वॉमिटिंग. Okay, so after taking the alcohol, if the person feels that he gets the nausea and frequent vomiting, so in these cases we can use ipecac, okay, kali beach, nux vomica, petroleum, pulsatilla. So these are the leading remedies to reduce the nausea and vomiting after taking the alcohol. And in these five medicine, the most common is the ipecac and kali beach. Next.
then person may feel that the bloating, okay, gastritis, gastric ulcer, dyspepsia after taking the alcohol. So we can use arsenic alb, like the person may eat some decayed food or may eat on a large amount of, and then he gets the diarrhea, bloating, etc. Then azafoetida for the dyspepsia or the heartburn, acidity. And carboveg we can also use when the person having the pain and bloating on the upper abdomen. Then China officinalis we can use when the person have the sour eructation, that is the sour vomiting, then abdominal pain, etc. Then lycopodium, when the person having the gaseous complaint on your lower abdomen, especially on the right side, then we can use the nitric acid. Especially it is used for the ulcer, either gastric ulcer or the duodenal ulcer. And nux vomica, okay, after taking the alcohol within a short period of time, person have the bloating, gas, nausea, vomiting, etc., and the raphanous sativus. Next. Hangover also, it is common after taking the alcohol. Okay, so we have the medicine like arsenic alb, carpovage, ipecac, chalcemium, nux vomica, opium, rustox, cicalcor, that this medicine can use to reduce the hangover. And I just remember the one episode of Kapil Sharma in which the Sanjay Dutt are saying that whenever I get the hangover, I use the Nux vomica. So Nux vomica is one of the good medicine to reduce the hangover. And the other medicines are also we can use like opium, arsenic, gelsemium, etc. Next. If person are consuming alcohol on a long period of time, so male may suffer from the impotency or the erectile dysfunction. So in these cases, we can use the agnus castus, argentum nitricum, carbonium sulf, lycopodium, and selenium. And the argentum nitricum mainly used when the person having also some sexually transmitted disease also like gonorrhea, syphilis, or etc. Next. The person having some neurological complications like he has the frequent trembling or some dementia, memory loss, etc. So we can use agaricus muscularis when the person have a don't control over their muscles. So a person are losing their muscle power. So we can use the agaricus muscularis. Then the gelsemium we can use nux vomica, zincum mat, ranunculus, and phosphorus. So this medicine we can use for the neurological complications. Next. These are the medicines in homeopathy that can eliminate the excessive emotions, the side effects of the alcohol consumption, and even the serious side effects. So there are the role of homeopathy in reducing the alcohol use. Okay, and generally the medicine are prescribed in the material dose. It means the physiological dose, either in a mother tincture form or in a lower potency for some period of time, and person may reduce the craving and the withdrawal symptoms. So in homeopathy, there are a lot of medicines. Someone asked that is using the narcotic drugs in this can be more effective, ma'am? Effective, but the effects that given the naltrexone medicine, it is more than these narcotic drugs. And narcotic drugs में उसकी वजह से पर्सन में भी उसकी हैबिट पर आ जाता है कि ये मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी. So next slide. Okay, so these are the references that I get, like from the H.C. Allen book, from the William Borick book, then from the H.S. Khaneja,
Next. Harrison, and from the Kant Repertory, Patak, from the SR Patak book, and some websites. Okay, so these are the references. Thank you, everyone. Ma'am, there are some more questions from the participants, ma'am. Okay. The next question is the next question is role of diet and prevention in alcoholism, ma'am. Such there is a not a major role of that to prevent the alcoholism, because the alcoholism is related to your mental state. a person mentally वीक है, उसकी वजह से वो अल्कोहल कंजप्शन में आ रहा है. So as such there is no any kind of role, but yes, डाइट का रोल उस पर आ जाता है जब पर्सन को आइदर डाइजेस्टिव इश्यू डेवलप हो गए हैं या तो फिर कोई हिपेटिक इश्यू आ रहा है. तो उसमें अगर आप कोई डाइट एडवाइस कर रहे हो कि जिसमें वो फैटी फूड नहीं आ रहा है, ओके, तो फिर हम डाइट का रोल कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट सच मच रोल इन द डाइट. Okay, ma'am. And the next question is how frequently repeated the doses, ma'am. The next question. जनरली अगर हम एक बात कर रहे हैं कि चलो सल्फ्यूरिक एसिड है जो पर्सन में मेनली क्रेविंग आ रहा है एक्सेसिव, तो हम सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम प्रिस्क्राइब कर रहे हो ना मदर टिंचर फॉर्म, तो आप उसको मतलब ज्यादा आप उसको 7 दिन तक दे दो, 15 दिन तक दे दो, फिर उसका फॉलो अप लो कि उसकी जो क्रेविंग है वो कम हो रही है या फिर नहीं. अगर वो पर्सन अपने सामने से बोल रहा है कि नहीं चलो अब मुझे क्रेविंग नहीं हो रही है, देन यू हैव टू स्टॉप दिस मेडिसिन. तो हम आपको बीडी में दे सकते हैं या तो फिर टीडीएस में भी दे सकते हैं. वो हम डिपेंड करेंगे कि पर्सन जो है वो कितना अल्कोहल पर एडिक्टेड है. तो दैट डिपेंड्स अपॉन दी पर्सन. आप डेली ऑडी डोज में भी दे सकते हो, बीडी में भी दे सकते हो, टीडी में भी दे सकते हो, शॉर्ट ड्यूरेशन में भी दे सकते हो और लॉन्ग ड्यूरेशन में भी दे सकते हो, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन दी पर्सन. जी मैम. The next question is medicines for nicotine addiction, ma'am. There are certain the medicine like bupropion and some I forgot the especially the name, but it can use to nicotine withdrawal symptoms. Okay, ma'am. And the next question is one has written like this, ma'am. In one case, Hello, I am ma'am. using. Hello, One am case. I audible, ma'am? Yes. In one case, I am using Quercus mother tincture. Primarily, it reduces the alcohol consumption. But now, the same dose, it does not work. What to do next, ma'am? Okay. So my first question is that कि आप जो मेडिसिन दे रहे हो फॉरकस, ओके, तो वो जो पर्सन पर आप दे रहे हो, वो पर्सन विलिंग है कि उसको क्रेविंग कम करनी है या फिर अल्कोहलिज्म में से बाहर निकलना है. क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, अगर पेशेंट है उसकी विल इतनी डेवलप नहीं है, तो आप जितनी भी मेडिसिन दे रहे हो वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही वर्क कर रही है. एंड अगर वो अपने आप से ही विलिंग है तो आप उसका डोज बढ़ा सकते हो. आप उसको मतलब मदर टीचर फॉर्म में दे रहे हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी आप ज्यादा कर दो, या तो फिर वही मेडिसिन की कोई कॉम्प्लीमेंट्री चूज कर लो और उसको आप हायर पोटेंसी में दे दो. तो वी कैन डू दैट. Okay, ma'am. And next question is, ma'am, abuse having withdrawal symptoms. मतलब के अल्कोहल अब्यूज को मतलब विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं वो. आई डिडंट गेट दिस क्वेश्चन. Actually, me too, ma'am. Actually, the question is also incomplete. Actually, Yes. could the participant write the question again? And we'll move on to the next question, ma'am.
how much time usually it take to see a result? इट अगेन डिपेंड्स ऑन अ पर्सन के अगर चलो कोई पर्सन है उसको अल्कोहल कंजप्शन बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं ले रहा है और शॉर्ट ड्यूरेशन में ही उसने स्टार्ट किया है तो वी कैन गेट फास्ट रिजल्ट। बट अगर वो बहुत सालों से ले रहा है और उसको वो स्टेज में आ चुका है कि उसकी जो साइकिल है वो चल रही है कि चलो अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन हुआ उसके बाद उसको विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, वापस इंटॉक्सिकेशन हो रहा है, वापस उसको विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, तो जिस पर्सन में रिजल्ट्स में मतलब वेरी लाइक मे बी इट टेक्स टाइम लाइक few months to even year also. It depends on the person's condition. Next question, ma'am. Actually, they have repeated they have framed the question, ma'am. Whether abuses having withdrawal symptoms. This is the question, ma'am. Yeah, right. The persons who are taking the alcohol, okay, whether the person has the alcohol abuse, alcohol use disorder, or the alcoholism, they all have some withdrawal symptoms. And the withdrawal symptoms are the common, like the nausea, vomiting, trembling, sweating, etc. Some may have the headache frequently. So these are the withdrawal symptoms. I hope everyone got their answers. If there are any questions, there is another question, ma'am. If a person does not want to get off from the alcohol, but family want to get relief from this, at what amount we can give relief to patient? This is the question, ma'am. Yes, this is the common scenario that we can see in majority of the family कि चलो फैमिली को ये अल्कोहल की जो लत लगी है उसको हैबिट है वो छुड़वाना है लेकिन पर्सन नहीं चाह रहा है वो छूटे तो हमको वो फास्ट रिजल्ट इस केसेस में नहीं आएगा। बट हम क्या कर सकते हैं कि उसका जो अल्कोहल है वो रिड्यूस आए तो जो भी मेडिसिन आप यूज कर रहे हो वो आप उसको पानी में मिलाकर दे दो कि जैसे वो पानी ले रहा है तो उसमें आप डाल दो और मदर टिंचर के ड्रॉप्स। तो क्या है कि उसको लग रहा है कि मैं चलो नॉर्मल वाटर पी रहा हूँ लेकिन वो मेडिसिन ले रहा है, तो आप ये ट्रिक आप अपना सकते हो। बाकी तो मतलब अगर पर्सन ही नहीं चाह रहा है कि वो उसकी ये हैबिट कम हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। Okay, ma'am. There are two more questions, ma'am. It is possible to stop alcohol craving permanently by homeopathy medicines? This is the question, यस ma'am. यस यस यस, इज इट पॉसिबल? हमारे पास लॉट ऑफ मेडिसिन है जो मैंने स्लाइड में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में फर्स्ट स्लाइड रखी ना जिसकी वजह से हम क्रेविंग कम कर रहे हैं, तो उसको क्या हो रहा है कि स्पेशली द मेडिसिन लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, क्वार्कस, तो उसकी वजह से उसको डिस्गस्ट फीलिंग आने लगी कि अल्कोहल की तरफ से, तो हम परमानेंटली स्टॉप कर सकते हैं इस मेडिसिन से। लेकिन उसके साथ साथ हमें पर्सन को मेंटली भी स्ट्रांग बनाना पड़ता है कि अगर कोई फैमिली इश्यू आ रहा है, कि हमने एक सिम्टम्स देखा कि अगर फैमिली में कोई हेल्थ इश्यू है, उसको स्ट्रेस आ रहा है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो वो अगेन अल्कोहल लेने ना लगे, तो उसको हमें प्रॉपर काउंसलिंग भी करना पड़ेगा। तो वी कैन परमानेंटली स्टॉप द क्रेविंग विद होम्योपैथिक मेडिसिन। जी, ma'am. Another question, ma'am. How can we use Plantago mother tincture? Plantago is also one of the good medicine to create the disgust feeling in the person. And generally, you can give the 10 to 20 drops in a half cup of the water in a BD dose for 7 to 10 days. And then take the follow-ups. कि चलो क्या हो रहा है? तो Plantago major we use और हम अगर उसको अल्कोहल कंजप्शन की वजह से अगर उसको कोई टीथ प्रॉब्लम आ रहा है या तो फिर उसको नर्व प्रॉब्लम है तो भी हम प्लांटे को यूज कर सकते हैं। Okay, ma'am. And the final question, ma'am, and the next question, ma'am. Can we use mixed mother tincture combination? हाँ, यस यस यस, यू कैन यूज। अगर कोई मेडिसिन आपको क्रेविंग कम करने के लिए ले रहे हो, कोई मेडिसिन आप हैंगओवर जो उसका हो रहा है उसको कम करने के लिए ले रहे हो, और साथ ही साथ कोई मेडिसिन आप लीवर कंप्लेन है, तो यू कैन यूज द कॉम्बिनेशंस आल्सो।
Ji, ma'am. And the next question, ma'am, is it possible an alcoholic be given the medicine unknowingly? हाँ, वी कैन। हमारे होम्योपैथी के पास तो वो है कि अगर ड्रॉप्स आप अगर पानी में मिलाकर दे दोगे तो उसको पता नहीं चलेगा। यस। Okay, ma'am. Ma'am, they are asking the name of the medicine for nicotine addiction, which you have mentioned, ma'am. Yes, I write the proper spelling of that medicine. No, ma'am. Just to repeat it, ma'am. Just to spell it, I think, ma'am. To tell the name of the medicine. Bupropion. Okay, ma'am. Any biochemic role is there in alcoholic withdrawal, ma'am? Biochemic medicines role. अगर आप बायोकेमिक यूज करना चाहते हो तो आप उस कंडीशन में यूज करते हो जब उसको मतलब न्यूरोलॉजिकल कंप्लेन आ रही है, लाइक डायमेंशिया है, या तो फिर उसको ट्रेमलिंग आ रही है, या तो फिर उसका मसल जो टोन है वो डिक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास काली ग्रुप है बायोकेमिक में। और या तो फिर पर्सन को सिम्टम्स में वीकनेसेस आ रही है तो वी कैन यूज ऑल्सो दी जो फॉस्फोरस के सारे सॉल्ट्स है, तो वी कैन यूज दैट। Ji, ma'am. So the questions have been completed, ma'am. I hope every participants have cleared their questions. If anything remains, they can put it in the chat box actually. I hope everyone has cleared their questions, ma'am. There is no question left in the chat box also. On an end note, we would like to thank you so much for enlightening us with your knowledge, ma'am. And thank you, Aisha, for conducting such webinars. Thank you for all the participants. Thank you थैंक all. यू सो मच। Thank you for our media partner, Homeo 360 Degrees, and thank you all. Thank you so much. Yeah, good night. Coming back with the another session tomorrow. Thank you. Thank you, ma'am. Good night, ma'am. Good night, everyone. Yeah.